છે પેલું લીલી લીલું ઝાડ છે, ઝાડના પેલા બે બાટા દેખાય છે, પાણીની મોય બાટા દેખાય એ છે મારું ઘર. એ પેલા બે બાટા દેખાય છે, લીલા લીલા દેખાય છે, એમાં છે મારું ઘર છે. નદીની મોય અંદર બહુ દૂર બુડી ગઈ. શું કરતો મારે જતું રહ્યું, નર્મદાની મારે બધું જ જતું રહ્યું. મારી મિલકત, મારું ઘર બાર, મારા છોકરાના લઈને નાઠું, ખેતીવાડી સબ ઢોર વાસણ કશું મારી કરે રહ્યું નથી. અને આજે 5-6 દિવસ થયા, કપડાં પહેલા તેવા છે, નાવાનું નહીં, ધોવાનું નહીં. મારી હું હાલતમાં આવી ગયો છે બરોબર, મરણ ટરણમાં હાલતમાં મળી જતો તે હાલથી નહીં કરતા મારા છોકરાને જઈ રખડી ખાતા તો સારું આવતું. આટલી મારી વિનંતી. तो हमें बाहर ना निकल सकता है, तो पुलिस आई એટલે અમને બૂમ પાડી કે પાણી આ ગયું ને નકલો તો અમે બહાર નહોતા નીકળતા. એ લોકો આવીને પછી અમને જબરજસ્તી બહાર નીકળ્યા, તો પછી અમે નીકળ્યા. તો અમારે પહેરેલા વસ્તારથી જ અમે નીકળ્યા. ખાવાનું બર્તન નહીં કે પીવાનું બર્તન નહીં એવા. અમારે તો એ જ કહેવાનું હતું સરકારને કે અમે પહેલેથી પોકારતા આવેલા કે ડૂબીશું પણ હટીશું નહીં. તો સરકારે એ જાણ્યું કે આ લોકો હટી જવાવાળા છે, એવું પાણી ભરાય તો કહેતો અંદર રહેતો સરકાર કે એ તો પાણી જાય તો ઉંદર નાહે એમ નાહવાના હે એ લોકો. તો તે જ હાલત એમણે પાણી ભરીને પછી અમને નાહવાની કદર કરી, પણ અમે એકદમ પાણી આવવા બાજુ નાહવાવાળા નહોતા. આ રીતે આરામથી ઊંઘી રહેલા હતા. પોલીસે આવીને બળજબરીથી અમને પકડીને બહાર કાઢેલા. એક આટો સરકારને અમે મકાના અમારા ઘરા દાન કરી દીધા. એક સમજી लिया અમે કે સરકારને ઘરા દાન કરી દીધા અમારા મકાના. એ વખત આવે તો અમે પોતે જીવ દાન કરવા તૈયાર હું, પણ પાછળ સરકારથી ધાકીને અમે હટવાના નહીં જા. જે અમારું સોપાણીશ્વરનું મંદિર એ ડૂબેલું હતું, સરકારે ડૂબાડી દીધું, તોય પણ એ મંદિર એ ડૂબાયું નથી. એવી રીતે કારણથી અમે એ ઝુંડા લગાવ્યા. અમારો રણનું પેર હતું, એમાં બી અમારા ઝુંડો સરાવ્યા. नर्मदा में कितना पानी बह रहा है, इसके आंकड़े कितने झूठे हैं. कच्छ और सौराष्ट्र में कितना पानी आज भी बहता है,
जिससे कि पीने की प्यास बुझ सकती है 2 या 5 साल में, वह कितना सच है। आप देखिए कि कच्छ को 2025 साल में पानी लेने वाली यह योजना उनका आखिरी में कितना फायदा करेगी। और घाटी में ही नहीं, बांध के नीचे में भी, गुजरात के हो या किसी भी राज्य के हो, मछुआरों से लेकर एक एक गांव में समुद्र घुसने से या अन्य प्रकार से जो नुकसान होगा, उस पूरे नुकसान की कीमत क्या है। हमारा विश्वास है कि अब जब बारी पहली मणिबेली पर आई है, तब वह लड़ाई केवल मणिबेली की है, यह मानकर कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के ही नहीं, हर देश के कोने कोने के जहाँ जहाँ संगठित और समझदार जनता है, जहाँ जहाँ गरीब दलित पीड़ित है, जिनके गांव से पानी हाथ से छूटकर कहीं बड़ी नदी में जाता है, जहाँ से उठाकर गन्ने को या बम्बई के फ्लश में बहता है, वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हम भी राह देखते हैं उस दिन की, जबकि कच्छ और सौराष्ट्र के लोग भी यह कहने के लिए सामने आएंगे कि इस प्रकार से पुलिसी बल पर लोगों को हटाकर हमें पानी नहीं चाहिए। वो पानी नहीं होगा, वो इनका खून होगा, खून जो अगर कच्छ में कभी पहुंचा तो भी उनकी प्यास नहीं बुझा पाएगी। हम उस दिन की राह देख रहे हैं कि जब इस देश के जन आंदोलन के इतिहास में यह बात लिखी जाएगी, इन लोगों ने, आदिवासी किसानों ने अपनी भूमि को त्यागने के समय भी बंदूक हाथ में नहीं ली, संविधान के तहत चले और संविधान के तहत अपनी जान को ही हथियार बनाकर ये लोग लड़े और किसी हथियार की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। इस देश की भूमि पर अगर जनता डटकर लड़ना चाहेगी तो वो लड़ सकती है। उतना अधिकार, जीने मरने का अधिकार, इस प्रकार से आंदोलन के तहत दांव पर लगाना अगर वो चाहेगी तो वो तो कोई छीन कर नहीं ले सकता। और यह पूरी लड़ाई केवल इन आदिवासी किसानों तक सीमित नहीं रहे, यही आशा लेकर मैं और देवराम भाई, जिनकी बहुत ही छोटी जमीन है निवाड़ के उपजाऊ भूमि पर, हम आज से अनिश्चितकालीन कुपोषण पे बैठेंगे। On the 14th day, the hunger strikers are arrested. The government promises a complete review of the project, and the strike ends. A month later, no steps have yet been taken towards a comprehensive review. The homes and belongings of 40 Adivasi families are washed away. The NBA announces that unless a review process begins, several activists, including Medha Patkar, will drown themselves in the Narbada on the 6th of August. The action is described as Jal Samarpan, sacrifice by drowning. As the media of the world descends on the dam site, the government invokes the Official Secrets Act, restricting the movements of the press. The police launches a hunt for Medha and others. In a statewide crackdown, thousands of movement supporters are jailed, but key activists
succeed in avoiding arrest. With the police not far away, a member of the sacrifice squad prepares to move out to the river bank under cover of darkness. क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि आप जैसे कार्यकर्ता हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप जिंदा रहेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा सबको, और न रहने से आंदोलन में शक्ति आएगी, इसका कोई भरोसा हमें नहीं लगता। यार इसके बारे में विवाद हो सकते हैं। हमें लगता है कि वैसे भी वर्किंग लाइफ टाइम कितना रहता है एक व्यक्ति का, और ये सभी भी मुद्दे हैं। और ये जरूर मानते हैं कि हर व्यक्ति का रहना, हमें ये इसलिए नहीं कि ज़िंदगी के प्रति नफरत है इसलिए समर्पण दल को ही समर्पण करने जा रहा है। ज़िंदगी के प्रति प्रेम है, मोहब्बत है, और इसीलिए समर्पण दल ये कदम उठा रहा है। मानते हैं कि हम हथियारों से लेके लड़ाई करना नहीं मानते हैं, और इसीलिए खुद के शरीर का ही हथियार बना के उसे झोंक देना ये हम अधिक उचित मानते हैं। और ये हमें तो ये लगता है कि ये समर्पण से, जैसे अपने देश में अनेक शायद लोग स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जानें नहीं गंवाते, तो शायद आज आप मैं यहीं बैठे नहीं होते। 5th of August, 1993. With the Samarpan deadline less than 24 hours away, the search for activists continues. The five-member group constituted by the Centre to continue discussions on the controversial Sardar Sarovar project today appealed to the Narmada Bachao Andolan, the NBA, to defer Jal Samarpan program tomorrow.